At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सबने सोचा सिर्फ भारत के बारे में, लेकिन भारतीयों के बारे में किसने सोचा? सन 1950 26 जनवरी के दिन मिला भारतीयों को एक वजूद, उनकी पहचान, भारत का संविधान। आपको आपकी पहचान मुबारक हो, गणतंत्र दिवस मुबारक हो। We, the people of India. And that is absolutely right. आओ तिरंगा लहराएं, आओ तिरंगा फहराएं, अपना गणतंत्र दिवस आया है, झूमे नाचे खुशी मनाए। अपना 74वां गणतंत्र दिवस खुशी से हम मनाएंगे, देश पर कुर्बान हुए शहीदों पर श्रद्धा भी चढ़ाएंगे। विश्व के सबसे बड़े संविधान का खिताब जो है वो हमने पाया है, पूरे विश्व में लोकतंत्र का डंका हमने बजाया है। इसमें बताए नियमों को अपने जीवन में अपनाएं, थाम के एक दूसरे का हाथ आगे आगे कदम बढ़ाएं। आओ तिरंगा लहराएं, आओ तिरंगा फहराएं, अपना गणतंत्र दिवस आया है, झूमे नाचे खुशी मनाए। Namaskar, welcome and a very, very good evening to everyone who has joined us today for this Republic Day special evening on Masti Media Network's audiovisual platform Masti AVI. Maa Tujhe Salaam है ये 3 शब्द पर बयां करता है हर हिंदुस्तानी की दिल की आवाज को। सबसे पहले इसीलिए आप सभी को भारतीय गणतंत्र दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में, जहां पर पहले हम भारतीय उच्चायोग से हमारे एक विशेष अतिथि से मिलेंगे और फिर शुरू करेंगे आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम। मां तुझे सलाम। Greetings for India's 74th Republic Day to all Indians and friends of India. Welcome to the special evening where I am honored and delighted to welcome a special guest from High Commission of India to Singapore, followed by our cultural program, which has been curated just for you to take you through this patriotic journey with our performers. In fact, fantastic performers. 26 जनवरी यानी कि वो दिन जब बना भारत का संविधान, marking and celebrating the date on which Constitution of India came into effect. 26 जनवरी 1950, yes, 1950. अब ये जो सेलिब्रेशन है, मेनली इट्स हेल्ड इन द नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में राजपथ पर, ऑफिशियली नाउ नेम्ड एज कर्तव्य पथ बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत सारे सेलिब्रेशंस वहां पे होते हैं, एक ट्रिब्यूट पे किया जाता है भारतवर्ष को, इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ कोर्स। रिपब्लिक डे पर आज भी सुबह उतना ही ज़ील, उतना ही एंथुजियाज्म इन पेट्रियोटिक फ्लेवर बिल्कुल देखा गया, एंड ऑफ कोर्स द जन भागीदारी एज एनविजन्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाज एक्चुअली सीन लीडिंग नेशन का सेलिब्रेटिंग रिपब्लिक डे कर्तव्य पथ पर आज के दिन में अलोंगसाइड इजिप्शियन प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह एल सीसी एज द चीफ गेस्ट फॉर द डे। परेड में यू मस्ट हैव सीन ऑन वेरियस ब्रॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स दैट was a unique mix of a lot of things that we are known for, and Nari Shakti was one of the highlights, of course, along with New India. Now, as per tradition, national flag जो है उसको unfurl किया गया, followed by national anthem with a booming 21 तोपों की सलामी. Now, amongst the many firsts, this 21 gun salute was given with 105 mm Indian field guns. उसी के साथ साथ marching down the कर्तव्य पथ जो है, for the very first time were combined band and marching contingent of the Egyptian armed forces. इसी के साथ साथ display of various tableaus. Now, that has always been such a delight to watch. Now, without wasting any time, just not in India, of course, हम सभी भारत से दूर जो बाहर रहते हैं, we all celebrate it wherever we are. We celebrated it today at the High Commission of India in Singapore as well, and this is the right time that I invite my very special guest this evening, that as I have mentioned before, please welcome Ms. Saraswati Dey, who's the Counselor dealing with political affairs, press and culture at the High Commission of India in Singapore. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सबने सोचा सिर्फ भारत के बारे में, लेकिन भारतीयों के बारे में किसने सोचा? सन 1950 26 जनवरी के दिन मिला भारतीयों को एक वजूद, उनकी पहचान, भारत का संविधान।
आपको आपकी पहचान मुबारक हो, गणतंत्र दिवस मुबारक हो। वी द पीपल ऑफ इंडिया। Hi Saraswati, welcome to Masti AVI. Namaskar. Hi. Good evening to everyone and a very happy Republic Day. It was wonderful to hear from you the entire description that you gave about the speech by the Honorable President and the tableaus and all. So since we had our own function in the morning at the High Commission of India, I personally have not, I've read a few tweets, but I've not been able to see it yet. But it was wonderful hearing about it from you. So I would say that's a wonderful beginning. And thank you for having me on your channel and on your program. It's always wonderful to be working with you guys. The honor is completely ours, Saraswati. As you mentioned that because you were busy in actually organizing what was happening here in High Commission of India in Singapore, that's why you actually caught up with all the highlights I gave abhi thodi der pehle. So why don't you give the highlights of what happened this morning at the High Commission of India in Singapore? Let's start with that. Yeah. So I'll instead of just covering the morning, I'll cover a little more. So this year it's the 74th Republic Day, but it is also been celebrated as part of the ongoing Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations. So and therefore the scale, the grandeur, the content which we were trying to project for this event was very close to our heart. Also, this for our team, for the current team, for High Commissioner and the entire new team which had come right in the middle of COVID in 2020. This was one of the first days where, like, there are literally zero restrictions. Like, you can have as many people on site, you can be without mask and all of that. So for our team, this was the first. These were the couple of two first large in-person events, though we have been working over the last few months, but then a National Day reception is always special. Absolutely. So yesterday evening we had a reception at the Shangri-La, and we, despite the weather which we all have all been conned by, so we had a significant number of guests who kind of battled against it and still participated with us. So that was wonderful. And one special element was that we showcased something when the guests left us. We bid farewell to them with an Experience India goodie bag, where essentially we showcased something called the One District, One Product initiative, which we are now currently following in India. The goodie bag essentially featured papier-mâché, which is a very niche handicraft item from Kashmir. We had some spices from down south of Idukki district in Kerala. We had some coffee from Coorg, and we have some tourism brochures. Oh, not to forget, we had some millet chips in there, as India is also marking the International Year of Millets 2023 this year. So, and all of that was packaged in a jute bag, so keeping it environmentally sustainable and friendly as far as possible. So we were trying to project all of this together with the cultural elements and the formal part of the event as well. We were very honored by the presence of our guest of honor, Honorable Minister of Trade and Industry, Minister Gan Kim Yong, and MP Rizal and Ms. Yo. And that added, besides a lot of uniformed friends from the Singapore Defense Services and the different missions and embassies here. So it was indeed very, very heartwarming when so many Indians and friends of India come together to celebrate on 2 consecutive days. And not to forget, today morning it was raining, and still kids, parents, old people. I mean, it is, this is what many times people ask, what keeps us going? This is exactly what keeps us going. So please keep coming to our events, and it just fuels us to do better and better. आई थिंक वो जज्बा कभी नहीं जा सकता जब तक वो जज्बा है, वो आग जब तक है ना अंदर, तो चाहे आंधी आए, तूफान आए, we will be there. Indians out of India, but
इंडिया को इंडियन से नहीं निकाल सकते हैं, as we say. That's exactly the Indianness is still very much alive, and that's really very, very commendable. And I think the whole team from High Commission is very, very glad that Singapore participated with all its love and affection to both the events, and there's much more to come. Of course, that is true. That's wonderful. And we know because even Masti Media Network was a part of yesterday's function. And I also Yes, Renuka was there. out of the bags we got, we all shared amongst the team. So thank you so much for that. If we talk about Republic Day memories, Saraswati, which would be your fondest memory, which you could associate with as a child on Republic Day? To be on, I'll be very honest on this one. I think once we become a foreign service officer or an Indian public civil servant, ऐसा लगता है शायद लोगों को कि हम बचपन से ही कुछ ऐसे मॉडल में रहे होंगे. लेकिन हम भी I mean, बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन मैं शायद उन लोगों में से थी इस दिन या इन दिनों जब नेशनल डेज होते थे कि यार इतनी सुबह उठा दिया, जनवरी विंटर्स भी हुआ करता है कि इतनी सुबह उठा दिया और लेके परेड करवाएंगे और पता नहीं कुछ गाने वाने गवाएंगे, ये हो क्या रहा है. और विंटर्स में ड्राई होती थी और फील्ड में धूल वूल उड़ती थी, तो आई हैड सम एलर्जिक कंडीशंस, सो आई वुड फॉल सिक आल्सो इमीडिएटली आफ्टर दैट. सो so during that part, if you asked for me to stand out fond memories, I am not sure. I was just like any other kid at that point of time. But my fondest memories definitely are Delhi onwards, when I started my academics and then I joined the service. The whole impact of it suddenly then hits you, that what all that you've been doing since your childhood as just school karwa raha hai, it suddenly hits you that you realize none of it is lost. You know that us din subah utna hai, taiyar hona hai, jana hai, there is a rigor to it, there is a discipline to it, and you kind of take it in your step and you kind of improve upon it and you just get better. So I can say that yes, probably we used to grumble at that point of time, like probably many of us do even now, all the kids, but all that flavor that we carry jab hum bahar especially India se bahar jaake kahin naukri karte hain, all of that comes back in a big way. So I would say that my fondest memories are a mix of all of that accumulating year on year. And now when I see youngsters coming in today, I met a group of people who are interning in Singapore, who have come from IITs, various IITs in India. So they're interning, but they just came in for the event. So and wo bhi barish mein and weather mein. So it's always interesting to see that how youngsters come for these events. So yeah, I mean, the impact of these programs I've realized it much more, and I feel it much more as a member of the Indian Foreign Service and the Indian public service. And I think we are actually everybody is remembering parade dekhne ke baad gully cricket 9 baje se 2 baje tak. Of course we were looking forward because the schools used to get off quite soon. Main to laddu ke liye jati thi jo ki wo yellow color ke packet mein milta tha. For that I used to march past kuch bhi kara lo mujhse. but having said that, before I officially ask you to open our show today, I know for a fact that you sing very well, and I was quite excited to actually, when I got to know that you are going to be here, और मैंने decide कर लिया था कि आज आपसे एक छोटी सी request तो हम कर ही सकते हैं, that if you could sing few lines for us and officially open the show today, this cultural evening, Maa Tujhe Salaam. Thank you so much for the compliment. बहुत अच्छा तो नहीं गाती हूँ, थोड़ा बहुत गुनगुना जरूर लेती हूँ. But I have not been well for the last few days, the usual flu that is going around and affecting everyone. So I'm kind of on the recovery. I'll try humming a few lines for you. आपकी request सर आंखों पर. Thank so you. I'll just do Air Watan, a few lines of that. Oh, that's beautiful. Thank you. Thank you. ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन
मेरे वतन, ऐ वतन, मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहां भी मेरी बुनियाद रहे तू, है वतन, मेरे वतन, है वतन, मेरे वतन. Wow, wow, that was just amazing. जितना खूबसूरत ये गाना है, उतने ही दिल से, इतनी शिद्दत से आपने ये गाना गाया है और मेरी रिक्वेस्ट भी रखी है. So thank you so much, Saraswati, for actually taking out time today from your busy schedule. I know you have been going crazy for the past 2 days, but it's wonderful to have you here and so very well depicted in this with this song. Uh, before I say bye bye to you, what message you want to give out on the occasion of Indian Republic Day to all the viewers who are watching us today? To all the viewers of Radio Masti 24/7 from the High Commission of India, a very happy Republic Day to all of you. Do keep plugged in to all the different channels that we use to reach out to you. We are here for you for any support that you will need. Sometimes we may take time to reach to you, but then we try our best to help you in as much as we can. And to your team particularly, keep up the good work. Do help us reach out to people with more and more information, which you do from time to time. Thank you so much for that. And all the best to your entire team. Keep up the great work, and we'll keep working together. Great. Saraswati, it's time for our special and chief guest this evening on 74th Indian Republic Day. Please open our musical program, Maa Tujhe Salaam, officially so that we can invite our really, really talented performers this evening. So let's not delay anymore and let's begin Maa Tujhe Salaam. Thank you, Saraswati. Thank you for your Thank time. you so much. Thank you for Happy having me. Republic Day. Jai Hind. Jai Hind. That is right, and that was Ms. Saraswati Day from High Commission of India, Singapore in Singapore, and बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ उनसे सुनने को भी मिला. But अब वो वक्त आ चुका है जिसका सबको बहुत बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार है, including me as well. I am quite excited आज के लाइनअप के साथ, and एक बहुत ही खास प्रोग्राम आज के दिन में हमने तैयार किया है गणतंत्र दिवस के इस occasion पर, जहाँ पर not only we will have our very very amazing singers, but उसी के साथ साथ होंगे कुछ हमारे कवि एंड कवियत्री. अब वो आएंगे, क्या रंग लाएंगे, आज देशभक्ति के कौन कौन से कलर्स यानी कि रंग देखने को मिलेंगे. चलिए, अब जब शुरुआत हो ही चुकी है, कहते हैं ना आगाज जो जब हो चुका है, तो बस चलते हैं आगे और बुलाते हैं सबसे पहले हमारी आज की शाम को शुरुआत देने के लिए हमारी सबसे प्यारी और एक बहुत ही पुरानी एसोसिएशन इनके साथ रह चुकी है, brilliant poetess, and let's invite Meghna. Let's begin. Maa Tujhe Salaam. Hi Meghna, welcome. Happy Republic Day. Okay, Meghna. Hi Meghna, can you hear me? You were on mute. आपको unmute करना पड़ेगा. Muting me बार बार.
नहीं, नहीं, अब मैं चुप रहूँगी। आप बिल्कुल यहाँ पे जो हमारा स्टेज है, जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो बिल्कुल आपका होने वाला है। मेघना, सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू एंड टेल अस दैट आज आज ये जो क्या लिख के लाए हो, क्या सोच के आए हो एंड व्हाट आर योर थॉट्स आज के दिन में, इंडिया के रिपब्लिक डे पर? So, a happy Republic Day to you and to everybody listening in and watching on Facebook. आज बसंत पंचमी भी है, आज सरस्वती पूजा भी है, तो for that also happy बसंत पंचमी to everybody as well. आज मैं जो लेके आई हूँ, it's a mix of, I think वो बसंत पंचमी का थोड़ा सा दिमाग में चल रहा था, उसके साथ साथ रिपब्लिक डे भी चल रहा था, तो कुछ बगीचे की बात है, तो hopefully you guys will like it. Great. Can't wait to hear it from you. Bagicha it is, and the platform is all yours, Meghna. Great. And you guys can hear the guitar piche and everything is fine? Yes, yes, we can. Okay. Great. Okay, all right. तो कुछ फूल साथ मिलकर बैठे थे, कुछ फूल साथ मिलकर बैठे थे, गुलदान से निकलकर बगीचे में आ पहुंचे थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, माली ने ही हमेशा से काट कर मेज पर रखा था। मिट्टी की खुशबू कुछ भूल गए थे, अब भी माली को ही आसपास ढूंढ रहे थे। फिर एक गुलाब ने बात उठाई, अब भला हम लोगों की कैसे होगी सिंचाई। जूही मोगरा थोड़ा खामोश रहे, केवड़ा गेंदा बहुत देर तक कुछ सोचते रहे। फिर चुप्पी तोड़ते हुए गुड़हल ने कहा, अब हमें खुद ही अपना ख्याल रखना होगा, मिल के साथ कुछ क्यारियां बनाएंगे, पुराने पेड़ों में खाद डालेंगे, नए बीज लगाएंगे। पुराना बरगद सब देख रहा था, उसने कहा मेरी जड़ों में ज्ञान बहता था, अब थोड़ा सा फिर से खिलने लगेंगे। कहा चलो उस ज्ञान के साथ मिलकर फिर से संवार लेंगे। बगीचा तो अब भी वही था ना, थोड़ा प्यार से सहेजेंगे तो फिर से हंस देगा, थोड़ा प्यार से सहेजेंगे तो फिर से हंस देगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, यही तो वो बात है ना कि थोड़ा-सा प्यार से सहेजेंगे तो बगीचा खिल-खिल सा जाएगा एंड व्हाट अ परफेक्ट बिगिनिंग बिकॉज़ जैसा कि मेघना ने ऑलरेडी कहा कि ना ही सिर्फ आज रिपब्लिक डे है बट इट्स आल्सो बसंत पंचमी एंड उसी के साथ-साथ सरस्वती पूजा भी है अलग-अलग घरों में। हर जगह पर एक सेलिब्रेशन का माहौल भी है एंड डेडिकेटिंग टू दैट बगीचा एंड इंडिया भी एक बगीचे के जैसा है। वैरायटी ऑफ फ्लावर्स, कल्चर्स एंड एवरीथिंग सब एक छत के नीचे एक देश में रहते हैं एंड व्हाट अ ब्यूटी इट इज राइट सच अमेजिंग मेघना बहुत खूब लाइक वी हैव बीन एसोसिएटेड इससे पहले भी एंड I really like the way you write and I love it when you get that guitar of yours and उसके साथ साथ जब एक ठहराव सा एक आ जाता है पूरी बात में so that was just amazing and thank you so much. Thank you so much, Antara. Thanks for inviting me again and look forward to hearing all the other poets. And I see Inder also there, so looking forward to the rest of the program. Happy Absolutely. Republic Day. Happy Republic Day, Meghna. Thank you. Thank you. आइए आपको अब यहाँ से सीधा ले चलूं इंडिया से कोई हमने यहाँ भारत से कोई जुड़ने वाला है हमारे साथ इस वक्त भाई मस्ती मीडिया नेटवर्क का ये जो प्लेटफॉर्म है मस्ती AVI वी हैव हैड so many programs in the past 2.5-3 years and इन programs में जो है उससे पहले से ही जो on
स्टेज परफॉर्मेंसेस उससे पहले होती थी। बहुत सारे ऐसे टैलेंट को मस्ती मीडिया नेटवर्क ने वो जगह दी है और वो पायदान दिया है जिससे बढ़कर आगे आज वो अलग-अलग जगह पर बहुत-बहुत नाम कमा रहे हैं। ऐसा ही हमारा एक बहुत ही कमाल का प्रोग्राम, एक शो मस्ती शोकेस, और उसमें हमने एक बार इंट्रोड्यूस किया बांग्ला एज़ अ लैंग्वेज, एज़ अ कैटेगरी, और उस कैटेगरी की हमारी विनर जो रही उस साल, तो आइए उनको बुलाते हैं और उनसे सुनते हैं, उनसे जानते हैं कि आज भारत के गणतंत्र दिवस पर वो हमारे लिए क्या तैयार करके लेकर आए हैं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सबने सोचा सिर्फ भारत के बारे में, लेकिन भारतीयों के बारे में किसने सोचा? सन 1950 26 जनवरी के दिन मिला भारतीयों को एक वजूद, उनकी पहचान, भारत का संविधान। आपको आपकी पहचान मुबारक हो, गणतंत्र दिवस मुबारक हो। वी द पीपल ऑफ इंडिया। Hi, Georgina. Welcome and happy Republic Day. Happy Republic Day to you as well and to everyone. Georgina, you are joining us all the way from Kolkata. That's right. Yes, and what, Georgina, what is your mood today on Indian Republic Day? What did you think जब आपको हमने approach किया and we were talking about that we have to, इस theme पे क्या कुछ अलग कर सकते हैं? So what were your thoughts? Well, this day has a great significance, because Republic Day ये ऐसा दिन है जो certain emotions stir करते हैं मन में. We are supposed to be proud of our country. There are certain idealistic things that people can say, but what happens usually is when you have a specific day assigned to, a particular festival or a particular occasion, what happens is, numerous emotions get stirred in your heart. And I was just thinking of the time when I was in Singapore. तो देश से दूर थी तब, स्पेशली ऑन दैट डे हमको देश की बहुत याद आती थी. तो पता नहीं क्यों ये सर्टेन ऐसे इमोशंस जो जुड़े होते हैं, ये पता नहीं कैसे कैसे आते रहते हैं. So today is also a day where I was feeling, that sense. बाहर हमारे कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा था, people were hoisting the flag, they were singing the national anthem. तो it creates a different feeling in your mind as well. और उसके साथ साथ आज एक added event भी है यहाँ पे. इनफैक्ट कलकत्ता में लोग ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो सरस्वती पूजा है. So as you can, yeah, I am all clad in a yellow sari. I don't know. वो भी एक special event है. So both events combined करके, people are in a very very festive mood, both due to Republic Day celebrations as well as due to Saraswati Puja. Right. So what have you got today, Georgina, for us? क्या तैयारी की है आज हमें सुनाने की? तैयारी तो उतना कुछ किया नहीं है, पर मन है कि मन्ना दे जी का गाया हुआ एक गाना था. वो एक मूवी था चार मूर्ति, बंगाली मूवी चार मूर्ति, और मन्ना दे साहब ने गाना गाया था. इट वाज अ पेट्रियोटिक सॉन्ग. So I was thinking of maybe singing that song, if I have your permission. Absolutely. The stage is all yours, Georgina. All the best. And that's the beauty that let's have a Bangla song at the very beginning. Sure. And to add to the typical Bengali flavor and the Bengali tone, I'm also playing the harmonium. The harmonium is not visible now, but I have it next to me and I'm trying to play it as well. Okay. Let's go. I'll start. Okay. Can you hear me? ভারত বর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো, তোমাতে আমরা লুহিয়া চলো, ধন্য হয়েছি ধন্য গো।
লুহিয়া জনম ধন্য হয়েছি ধন্য গো কিরীটধারিণী তুষার শৃঙ্গে সবুজে সাজানো তোমার দেশ তোমার উপমা তুমি তোমা তোমার উপমা তুমি তোমা তোমার রূপে নাই তো শেষ সঘন গৌর তমসা সহসা আসে যদি নেমে আকাশে তো হাতে হাত রেখে মিলিয়ে একসাথে আমরা নিমন তুমন ভোর ভারত আমার ভারত বর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো তোমাতে আমরা লুহিয়া জনম ধন্য হয়েছি ধন্য গো শক্তি দায়িনী দাও মা শক্তি ঘোচাও দীনতা ঘৃণ আবেশ আধার রজনী ভয় কি জননী আধার রজনী ভয় কি জননী আমরা বাঁচাবো এ মহাদেশ রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ বীর সুভাষে মহান দেশ নাই তো ভাবনা করি না চিন্তা হৃদয়ে নাই তো ভয়ের দেশ ভারত আমার ভারত বর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো তোমাতে আমরা লুহিয়া জনম ধন্য হয়েছি ধন্য গো ধন্য হয়েছি ধন্য গো ধন্য হয়েছি ধন্য গো Wow, wow, wow. I mean, Georgina, it's such a pleasure to our ears every single time जब आप आते हो, आप गाना गाते हो. इतनी मीठी आवाज, and that song for all those people, it's a Bangla song. So basically, crux of the song, जो इसका मतलब यही है कि we are so grateful that हम एक इतने खूबसूरत से देश, वो हमारी जन्मभूमि है, वहाँ हम पैदा हुए. So it's all about that. So Georgina, that was just beautiful, beautiful, just like you are looking today. Thank you so much. Thank you for taking out time amongst all what is going on around you at this point of time. But that was really, really great and can't be more thankful. Seriously. It's a special day, and definitely it's my responsibility as an Indian to be here. इसी बात पे thank you so much. Happy Republic Day. Jai Hind. Jai Hind. Thank you, and same to you as well. भाई इसी के साथ साथ अपने आज के इस कल्चरल प्रोग्राम को माँ तुझे सलाम ऑन मस्ती AVI इसको आगे बिल्कुल बढ़ाते हैं और अपने अगले परफॉर्मर को यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो जाने को बोलते हैं। जी हाँ, इनके साथ भी हमारा जो है काफी पुराना एसोसिएशन है एंड हाल फिलहाल में उसके बाद से इन्होंने बहुत सारे
जो है चीजें कंपोज भी की है, बहुत सारे गानों के वीडियोस भी बनाए हैं, खुद गाए हैं, कवर वर्जन्स किए हैं. He has been there, he has been around, and today he is gonna be there with us. Please welcome Inderjeet. Hi, Hello. Inder, and Hi, Antra. How are you? I am good. Happy Republic Day. Same to you. Thank you very much, and same to you. And wish the same to all the viewers as well. नॉर्मली आपने इंदर को हमारे इधर देखा होगा. आई वुड हैव बीन एड्रेसिंग हिम एज सनी, लेकिन आज थोड़ा माहौल अलग है. आज कुछ बात अलग है. आज सबकी वेशभूषा भी थोड़ी सी अलग है. आज एक अलग जज्बा लेकर सब आए हुए हैं. इंदर, आपकी कौन सी एकदम फेवरेट याद है रिपब्लिक डे से जुड़ी हुई आपके बचपन से? हाँ, बहुत सारी यादें हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल में परेड, दैट इज़ द बिगेस्ट मेमोरी जो हम राइट. करते थे. एंड आई यूज्ड टू लीड द परेड फॉर माय स्कूल. तो वाह. अलग ही एक्सपीरियंस था. उसके बाद जो लड्डू मिलते थे एनवेलप में, शायद कोई बोल रहा था इस बात के बारे में. नहीं तो बोल रहा था. आपने बोला था. हाँ, सो वी फॉन्ड ऑफ, वी बोथ आर फॉन्ड ऑफ लड्डूज. दैट्स गुड, दैट्स गुड. है ना. लड्डू नहीं, एक्चुअली बूंदी जो मिलती थी, छोटी छोटी हाँ, बूंदी, करेक्ट. वो है. और उसके बाद छुट्टी. उसके बाद छुट्टी, नो स्कूल, नो स्कूल. सो दैट यूज्ड टू बी रियली रियली गुड थिंग, आई वुड से. या ये दो तीन चीजें हैं, काफी याद है. काफी मिस करता हूँ उन दिनों को. या ग्रेट. सो इंदर, आज गणतंत्र दिवस के इस ओकेजन पर आप क्या तैयार करके लाए हैं हमारे लिए, हमारी ऑडियंस के लिए? एक मेडली है. बॉलीवुड ने इतने सारे अच्छे सॉन्ग्स दिए हैं, पेट्रियोटिक सॉन्ग्स दिए हैं ना इंडियन ऑडियंस को. और काफ़ी पसंद किया है लोगों ने. और ये जो सॉन्ग्स हैं जिनकी मैंने मेडली बनाई है, दीज आर वेरी वेरी फेमस सॉन्ग्स. यू नो इवन वन सॉन्ग हैज़ मोर देन 1 बिलियन व्यूज़ ऑन यूट्यूब. सो तेरी मिट्टी, राइट. सो ये वाला सॉन्ग तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है. सो 2-3 सॉन्ग्स की मेडली है, काफ़ी फेमस सॉन्ग्स हैं. एंड होपफुली लोगों को पसंद आएगा. सो एब्सोल्युटली. मैं ट्रैक पे इसको गाऊंगा, ठीक है. सो दैट उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट अलग आए. मेरी आवाज़ तो पता नहीं कैसी लगेगी लोगों को, बट म्यूजिक का मजा आना चाहिए. बिल्कुल. तो बिल्कुल ये स्टेज आपका हुआ. आप बिल्कुल ये जो समा है इसको और आगे, जो ऑलरेडी बना हुआ है, इसको और आगे लेकर जाएँ. अपना ट्रैक भी हमारे साथ शेयर करिए सो दैट वी कैन हैव द म्यूजिक हियर. या श्योर. ग्रेट. तो आप सुन रहे हैं माँ तुझे सलाम. यहाँ पे हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं इंदर. एंड इंदर ने जैसा कि हमको बताया कि अ, बहुत सारे गाने जो बॉलीवुड की हमारी देन है, एंड एवरी टाइम इट हैपेंस. आज सुबह भी हमारा एक बहुत ही खास कार्यक्रम हुआ, पेट्रियोटिक गीत माला. हमारे आरजे समर ने ये जो है किया, and it was just beautiful. Everybody enjoyed it, including me as well when I was at home. The stage is all yours. Let's go for it. थैंक यू. जस्ट गिव मी अ नॉट वंस यू कैन हियर द म्यूजिक. हाँ, Yes. थैंक यू. अपना ये दिन है आज का, दुनिया को जाके बोल दो, बोल दो. ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो. लहरा दो, लहरा दो. सरकशी का परचम लहरा दो. गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो. ऐ मेरी ज़मीं, अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे. महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे. ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे. फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस मुंह से निकल के खून कहे.
तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वहीं मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे। ओके, थैंक यू। वाह! ये इसको अब अचानक से मुझे लगा कि नहीं, इंदर रुक क्यों गए यहाँ पर, थोड़ा और बिकॉज़ ये गाने कुछ ऐसे हैं ना कि एकदम आप खो जाते हो इन गानों में एंड ऑफ कोर्स अ ह्यूज क्रेडिट गोज़ टू द लिरिसिस्ट्स एज़ वेल। क्या Yep, लिखा है! absolutely. Yep. खूबसूरत, बहुत खूबसूरत अलोंग विद द म्यूजिक कंपोज़र्स एंड आज के दिन में तो अ बिग थैंक यू टू इंदर फॉर Thank you. क्रिएटिंग दिस मेडले आज के लिए एंड सब इतना अच्छा गाया, इतना दिल को छुआ एंड मैं तो चाहती नहीं थी कि ये यहाँ पे खत्म हो बट वेल दैट इज व्हाट इट इज राइट नाउ। दैट वाज अमेजिंग इन दैट। Thank you, Andra, and I hope people also liked it who are watching the show right now. Absolutely. I'm sure that they have loved it completely. Like Kirti said, it's like superb. And Dev Soma is also saying, बहुत खूब. Everybody, दिल से निकली हुई हर आवाज को लोग पहचानते हैं और उसको जरूर अप्रिशिएट करते हैं. On that note, thank you so much and Thank you. happy Republic Day. Thank you, and thank you for having me. Have a good show. Thank you. Thank you. Thank you. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सबने सोचा सिर्फ भारत के बारे में, लेकिन भारतीयों के बारे में किसने सोचा? सन 1950 26 जनवरी के दिन मिला भारतीयों को एक वजूद, उनकी पहचान, भारत का संविधान। आपको आपकी पहचान मुबारक हो, गणतंत्र दिवस मुबारक हो। वी द पीपल ऑफ इंडिया। गणतंत्र दिवस के इस ओकेजन पर कैसा क्या क्या होता है ये तो आपने हमारी बातें सुन ली, लेकिन कोई है जो इसको अपने ही शब्दों में बुनकर यहाँ पर चुन चुन के लेकर आया है। कौन है ये एक कवि है जिनका इंतजार मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि कहते हैं ना हर किसी का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। हमारे इस कवि का भी पर्सपेक्टिव थोड़ा हट कर है, तो आइए उनको इनवाइट करते हैं और जानते हैं कि आज क्या लेकर आए हैं और किस तरह का 26 जनवरी का समा वो यहाँ पर बांधने वाले हैं। हाय अमित, वेलकम एंड आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और क्या माहौल बनाया है, इट वाज सो ऑसम टू हियर एवरीवन, इट्स रियली ग्रेट। इट इज सो गुड टू हैव यू एंड आई हैव बीन वेटिंग कि भाई जब अमित आएंगे तो अपना कुछ अलग एक अंदाजे बयां करके यहाँ पर हमें मंत्रमुग्ध करके जाएंगे। आज लगता है मेरी हिंदी जो टीचर है उनको मुझ पे बहुत गर्व होने वाला है। मैं इतने सारे जो कुछ भी उन्होंने थोड़ा बहुत कोशिश करके सिखा पाई होंगी, आज सारे के सारे वर्ड्स में खत्म कर देने वाली हूँ यहीं पे। बिल्कुल परफॉर्मेंस प्रेशर में दबा दिया मेरे को कि बेटा तू तैयार हो जा, कुछ अच्छा सा सोचिए हो। एनीवेज आई मीन दिस टाइम आई वाज जस्ट थिंकिंग कि क्या लिखूं और क्या ना लिखूं, तो फिर मुझे थोड़ा सा टाइम कम था इस बार, तो मुझे लगा जो मन में आया वही लिखता हूं। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में
जो पहले 26 जनवरी पे होता था जब हम छोटे थे, अबाउट जी लड्डू एंड ऑल दोज़ थिंग्स, और आज की डेट में मैं क्या फ़ील करता हूँ। बस उसी को 2-4 लाइनों में कोशिश की है लिखने की। बिल्कुल अमित जी, द स्टेज इज ऑल योर्स, सुनते हैं आपसे। थैंक यू सो मच अंतरा। तो मतलब जस्ट एक कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूं कि मैं दिल्ली को बिलोंग करता हूं, तो 26 जनवरी के टाइम पर वहां पे कड़ाके की ठंड पड़ती थी, तो उसी के बारे में कुछ थोड़ा सा लिखा है कि पहले क्या समा था और आज की डेट में क्या है। तो शुरू करते हैं कि क्या मस्त मजा आता था, क्या मस्त मजा आता था, 26 जनवरी का वो समा छा जाता था। रजाई में वो गरम गरम गाजर का हलवा और मूंगफली रेवड़ी का भी क्या मस्त माहौल छाता था। तो हमारे यहाँ 26 जनवरी पे कुछ और हो ना हो, माँ के हाथ का गाजर का हलवा कंफर्म मिलता था। तो क्या मस्त मजा आता था, 26 जनवरी का वो मस्त माहौल छाता था। रजाई में वो गर्मा गर्म गाजर का हलवा और मूंगफली रेवड़ी का भी क्या मस्त माहौल छाता था। सुबह 9 बजे पापा धक्का मार के जगाते थे और हम बिना पेस्ट किए फ्लैग होस्टिंग में जनमन गाने और लड्डू खाने भाग जाते थे। फिर पापा 26 जनवरी की दूरदर्शन पर पूरी परेड दिखाते थे, एक एक झांकी को बखूबी समझाते थे। पर पर अपना दिल तो शाम के लिए बेचैन हुआ जाता था। तो हर छुट्टी पे एक शाम जो होती थी वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती थी। तो पर अपना दिल तो शाम के लिए बेचैन हुआ जाता था। हाथ में होता था बैट बॉल और सामने वो और उसका मोहल्ला जो नजर आता था। 26 जनवरी का वो समा क्या मस्त मजा आता था। तो ये पास्ट के बारे में बात कर दी, प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं कि सच कहूं तो जनवरी में अब ये दिल सहम सा जाता है। सच कहूं तो जनवरी में अब ये दिल सहम सा जाता है। एक छींक या गले में खराश हो जाए तो कमबख्त कोविड होने का वहम ही मार जाता है। और ऐसा बेड़ा गर्क किया है इस कोविड ने, और ऐसा बेड़ा गर्क किया है इस कोविड ने कि जनवरी आते ही नई वेव या कुछ नए वेरिएंट्स का न्यूज आ जाता है। और इस साल तो जनवरी की तो महिमा अपरंपार है। और इस साल तो जनवरी की तो महिमा अपरंपार है। कोविड ने कसर न छोड़ी थी कि अब आईटी कंपनीज के ले ऑफ की भी आई बाढ़ है। तो मैं आईटी को बिलोंग करता हूं, तो इसलिए आजकल ले ऑफ की न्यूज बहुत आ रही है। तो और इस साल तो जनवरी की महिमा अपरंपार है। कोविड ने कसर न छोड़ी थी कि अब आईटी कंपनीज के ले ऑफ की भी आई बाढ़ है। चलो जाने दो, चलो जाने दो इन सब बातों को, जिंदगी की किताब का भी ये सब एक पार्ट है। चलो जाने दो इन सब बातों को, जिंदगी की किताब का भी ये सब एक पार्ट है। कुछ भी कहो जिंदगी मस्त है जब तक रेडियो मस्ती खूबसूरत दोस्त और फैमिली का साथ है। कुछ भी कहो जिंदगी मस्त है जब तक रेडियो मस्ती खूबसूरत दोस्त और फैमिली का साथ है। थैंक यू सो मच अंतरा। Avicii, that is what I was talking about. You never fail. जब भी आप आते हो, आप जिस तरह के, मैंने वही पर्सपेक्टिव की बात की, आपका एक सिंपल शब्दों में इस तरह से कुछ लिख कर लाना और हमें इस तरह से बयां करना, it always touches heart, brings a smile to all our faces, and हर कोई, आई एम श्योर दैट एक एक लाइन से जो है आपके रिलेट कर पा रहा होगा। जो जो आपने कहा, जो पहले का समा था और जो आज का समा है, perfect, on point. Absolutely. Thank you so much. Thanks a lot, Antra. And I feel glad, whenever you invite me. So it's good to write. Thank you. टीम कह रही है बचपन ही अच्छा था, बस एंड में रेडियो मस्ती बोल के दिल खुश कर दिया अमित जी। सारे ब्राउनी पॉइंट्स आज ले गए अमित जी यहाँ पर इस तरह से, बट दैट वाज रियली अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल, एंड थैंक यू सो मच अमित फॉर टेकिंग आउट टाइम आज इस खूबसूरत कविता के साथ आने के लिए यहाँ पर। आपको एक बार फिर से गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much. Thanks a lot. Thank you. Bye-bye. थैंक यू। इसी के साथ धीरे धीरे करते हुए एक एक परफॉर्मेंसेस जो है यहाँ पर देखते हुए, आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है दैट आप सभी को आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है वो बहुत पसंद आ रहा होगा। माँ तुझे सलाम, यही हम कह रहे हैं, एक एक कविता के जरिए, एक एक गाने के जरिए। बस अब वो बारी है और उनकी बारी है। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त का या फिर कोई भी इस तरह का हमारा म्यूजिकल जर्नी का ओकेजन होता है,
हमेशा हम चाहते हैं कि ये इस जर्नी का हमेशा हमारे साथ संग रहे, पार्ट रहे और इनके गाने के बिना और इनकी आवाज़ के बिना ये कुछ अधूरा-अधूरा सा लगता है। जब ये आएँगी सामने तो आप खुद ही समझ जाएँगे। लेट्स वेलकम हमारी अगली परफॉर्मर। नमस्कार। नमस्कार। हैप्पी रिपब्लिक डे। Happy Republic Day to you too. और Very happy Basant Panchami too. happy Basant Panchami, happy Saraswati Puja as well. Sarah said everything. I think it's a day of celebration. Patrilika di, as Absolutely. you rightly mentioned, that without you, our journey, any musical journey, it feels very, very incomplete. Uh, I have been asking everybody आज के दिन में that क्या क्या याद associated है Republic Day से? What would you say? What has been your fondest memory? As you know, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। तो यू नो दैट वो मैं ऑलवेज याद करती हूँ वो ठंड के दिन जब यू नो दैट जहाँ पे हमारा घर था तो वहाँ के सामने से बालकनी के सामने से ये परेड एंड दिस टैब्लोज यूज्ड टू गो सो हम लोग Wow, बहुत एक्साइटेड रहते थे कि कब यू नो दैट 26 जनवरी आएगा और वी विल एंजॉय दैट ओकेशन right. सो हाँ तो रियली वी हैड ए फैंटास्टिक टाइम दैट टाइम और मूंगफली हम लोग बहुत शौकीन थे उस टाइम मूंगफली के तो अभी तो नहीं लेकिन और बस वो मूंगफली के साथ हम लोग नजारा देखते थे तो इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग 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 रियली सो Great, सो great. रियली So, मतलब बहुत ईगरली वेट करते थे मतलब किसी को बिल्कुल, बुलाना नहीं पड़ता था मॉर्निंग में उठ के एकदम से जस्ट हमें चाहिए कि बालकनी में बैठ जाना है बस देखना है क्या हो रहा है सो इट वाज रियली आई मीन अमेजिंग शोज सो ऑलवेज यूज्ड टू एंजॉय एब्सोल्युटली अमेजिंग। ये यादें ही तो है ना, कमबख्त बहुत बहुत तड़पाती है। बट पत्रलेखा दी, आई कांट वेट। आई नो नॉर्मली जो गाना हमेशा हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं वो नहीं, आज कुछ अलग जो है पत्रलेखा दी यहाँ पर गाने वाली है। पत्रलेखा दी, लेट्स गो फॉर इट। द स्टेज इज ऑल योर्स। थैंक यू सो मच माँ तुझे सलाम। एंड अभी हमारे साथ है पत्रलेखा दी एंड आज इस प्रोग्राम का अमेजिंग Can you hear me, Pashrekha di? यहाँ पर कदम कदम पे धरती बदल रंग यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदल रंग यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर ताने अंबर है नदी सुनहरी हरा समुंदर है रे सजीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps,
India will awake to life and freedom. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, सिंदूरी गालों वाला सूरज जो करे ठिठोली, शर्मीले खेतों को ढक ले चुनर पीली पीली, घूंघट में रंग पनघट में रंग चम चम चमकीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। अबीर गुलाल से चेहरे हैं यहाँ मस्तानों की टोली, रंग हंसी में रंग खुशी में रिश्ते जैसे होली, बातों में रंग यादों में रंग 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 रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। रंगीला from the movie Saare. Brilliant, sung by Patriotic singer Dr. Patriotic. इश्क का रंग यहाँ पर गहरा चढ़ के कभी ना उतरे, सच्चे प्यार का ठहरा सा रंग झलके पर ना बिखरे, रंग दामे रंग हया में है रसीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदल रंग, यहाँ की बोली में रंगोली संग, धानी पगड़ी पहने मौसम है नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है रे सजीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। हो रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। वाओ ऑफ कोर्स देश हमारा बहुत बहुत रंगीला, और अपनी ही कमाल की आवाज हमारी पत्रलेखा दी के आवाज में फना मूवी का ये गाना ब्यूटीफुली sung by पत्रलेखा दी, that was amazing. I think everybody is showering all love and comments over here. Thank you so much. Thank you so much for inviting me for this auspicious occasion. Really, always as usual. The pleasure is always ours. मैंने कहा ना आपके बिना बहुत बहुत अधूरा है, and इसी के साथ साथ before we actually wrap up, पत्रलेखा दी, ये एक तो ये गाना हो गया, but वो है ना एक वो भी गाना है जिसके बिना मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसकी कुछ लाइनें, चंद लाइनें आज के दिन में अगर हम नहीं गाते हैं तो बड़ा इनकम्प्लीट सा उधर भी फील होगा। तो अगर if I may request you to sing few lines of the beautiful song Vande Mataram, if you can. Okay, I will try definitely. Thank you so much. Vande Mataram, Vande
मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। बहुत बहुत खूब, बहुत बढ़िया। And on that note, thank you so much to all the performers, thank you to the audience आज जुड़ने के लिए and हमारी इस कल्चरल इवनिंग का हिस्सा बनने के लिए। जाते जाते कुछ लाइनें बस यही कहूंगी कि गुरु मंत्र मेरा और इतिहास भी मेरा, तहजीब भी मेरी, विश्वास भी मेरा, मेरी जन्मभूमि ये हिंद है, Hindustan Mera. Wishing all of you a very, very happy Republic Day and Gantantra Divas ki aap sabhi ko shubhkamnaएं. Thank you and hope you enjoyed the show. Thank you so much, Amit ji, and thank you so much, Patriotic ji. Thank you so much, really. Thank you. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सबने सोचा सिर्फ भारत के बारे में, लेकिन भारतीयों के बारे में किसने सोचा? सन 1950 26 जनवरी के दिन मिला भारतीयों को एक वजूद, उनकी पहचान, भारत का संविधान। आपको आपकी पहचान मुबारक हो, गणतंत्र दिवस मुबारक हो। We, the people of India,